Okay, good. Thank you. Acha, so this is a paper that we plan to do today, November 21, paper 42. If you look at the threshold that you have for an A here, 28. Now, even keeping in mind that COVID की वजह से थोड़ा सा threshold low हुआ था, it's still an extremely low threshold for an M1 paper. M1 का threshold 40 से नीचे बहुत मुश्किल से जाता होता है वैसे, right? And it's understandable if you look at the paper. It has at least one question, maybe two, that are much trickier than what you usually find in M1. So this is November 21, paper 42. Out of the three variants that you had in this session, iska lowest threshold hai, and it's pretty low. Now let's look at some instructions before we start the paper. Kuch instructions to wahi hum pehle dekhte aa rahe hain. 3 significant figures, at least 3 significant figures aapne apne answers rakhne hain. Uska matlab ye hota hai ki working aapki at least 4 significant figures tak honi chahiye. Okay? वर्किंग आपकी सारी एटलीस्ट 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए, अदरवाइज आपके आंसर सही नहीं आते और उसका 1 मार्क आंसर का एक्यूरेसी का आपका विदाउट एनी रीजन आपका कट जाता है, राइट? सो बेसिकली आप इस तरह के मार्क्स बिल्कुल लूज नहीं करना चाहोगे ये लेवल्स के अंदर. ओके, अच्छा, देयर इज अनदर इंस्ट्रक्शन देयर एंड दैट सेज जहां पे भी आपको जी यूज करना है, यू शुड बी यूजिंग 10 meters per second square. Okay, now this is an instruction that you should follow because 10 यूज करके आपकी कैलकुलेशन भी थोड़ी सी सिंपलर रहती हैं. अगर आप 9.81 यूज करते हो, इवन तो दैट्स मोर एक्यूरेट, लेकिन आपकी वर्किंग थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है. दैट्स स्टिल गोइंग टू बी अलाउड, आपके एग्जामिनर उसके मार्क्स नहीं काटता, बट यू शुड एक्चुअली जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन दैट्स गिवन. 10 यूज करें और अपनी वर्किंग को सिंप्लीफाइड रखें, आपके केयरलेस एरर्स भी वहां पे कम हो रहे होंगे. सो मेक श्योर दैट यू डू फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन. जी की वैल्यू आपने 10 यूज करनी है आप, ठीक है? Okay, now the rest is pretty standard, so we're just going to move on and start with our first question here. Okay, so we have this diagram that shows a velocity time graph which models the motion of a car. The graph consists of 6 straight line segments. The car accelerates from rest to a speed of 20 meters per second. So if you look at the graph, इस पे बहुत सारे straight line segments आपको नजर आ रहे हैं. So first of all, आपने देखना है कि velocity time graph है. So the vertical axis represents velocity and this is time. So पहले आपकी कार जो एक्सेलरेट कर रही है 0 से 20 meters per second पर जाती है. Then it keeps the same speed, 5 meters per second, 20 meters per second. Then it decelerates, और फिर 6 meters per second पे कुछ रहती है. Then it accelerates again, and then it decelerates to come back to 60. ठीक है? Now you can see the graph. तो सारा आपको ग्राफ में नजर आ रहा है. And if you just take a few seconds to read what is given in the statement, इसने सिर्फ describe किया हुआ है कि ग्राफ में क्या क्या हो रहा है. So the car accelerates from rest to a speed of 20 meters per second. ये आपका first part है. Then it takes 5 seconds to do that. Then it travels at the speed for a further 20 seconds. So next 20 seconds जो है, it travels at that same speed. And then it decelerates to a speed of 6 meters per second. That's the next portion. ये 5 seconds लेता है next portion. And then the speed is maintained for a further t minus 30 seconds. And now this is important. ये उसने ये value नहीं दी हुई कि ये कितने time के लिए speed के ऊपर वो travel करती है car. And then after that, it accelerates again to a speed of 20 meters per second or over a period of 50 minus t seconds. So basically 50 seconds वाले time वाले time instant के ऊपर आपकी जो स्पीड है वापस 20 पे चला जाती है. And then it goes back to 0 at 60 seconds time instant. Okay, तो ये सारा आपको ग्राफ पे नजर आ रहा है, सिर्फ उसको डिस्क्राइब किया उसने नीचे. Now what do we have to do? The first part says, given that during the 2 stages of the motion when the car is accelerating, now which are the 2 stages when the car is accelerating? Acceleration का मतलब क्या होता है? Velocity is increasing. एक आपका ये पोर्शन है जहां पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, और ये आपका ये पोर्शन है जहां पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है. ओके, सो ड्यूरिंग दीस 2 stages it says the accelerations are equal. Now acceleration आपकी कहां से आती है? From a velocity time graph. Acceleration is the gradient of velocity time graph. अब यहाँ पे आप
वो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो, जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर्मूला है आपके, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इफ यू वांट, बट जब ग्राफ दिया होता है इट्स ऑलवेज इजियर टू यूज द ग्राफ फॉर योर कैलकुलेशंस। तो एक्सेलरेशन जो है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो आपको एक्सेलरेशन दे रहा होता है। So if the acceleration of both of these yellow parts are equal, इसका मतलब ये है कि उनके ग्रेडियंट्स इक्वल होने चाहिए। तो उसको यूज करके आपने क्या करना है, फाइंड आपने t की वैल्यू फाइंड करनी है। सो व्हाट you'll do is you'll just equate the gradients of these two lines. Okay, अब ग्रेडियंट्स क्या है, आपको ये पॉइंट पता है फर्स्ट लाइन का, दिस इज द ओरिजिन, you know this point, this is 5 and 20. You know this point for the other graph, that is 50 and 20. And what about this point? This point is t and 6. ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, इनके ग्रेडियंट्स फाइंड करके उनको इक्वेट कर दें। ठीक है, दोनों के ग्रेडियंट्स को इक्वेट कर दें एंड सी व्हाट यू गेट फ्रॉम दैट। सो फर्स्ट लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा, इट्स गोइंग टू बी 20 minus 0 divided by 5 minus 0. Second line of gradient क्या होगा, it's going to be 20 minus 6 divided by 50 minus t. And then you can just solve this equation, you'll get the value of t. Okay, so what does that give us? 20 into 50 minus t. I'm cross multiplying. 20 minus 6 plus 14 आ गया, 14 into 5. We simplify this to get 100 minus 20, t equals 70. 20t equals 30 and t equals 1 point. No, there's something wrong there. So we just need to check this again. 20 minus 0, is there something that we are doing wrong here? 20 minus 0 and 5 minus 0. 20 minus 6 and 50 minus t. That's fine. 20 into 50 हमने किया, that should have been 1000 and not 100. Okay, sorry about that. So this should have been 1000. And that gives us 20t equals 930. And we get something from this. ठीक है, ये क्या आता है, 930 over 20, that's 46.5. So this value should be 46.5. ठीक है, पहले मेरे पास बहुत छोटा नंबर आ रहा था. Of course, if you look at t 50 से थोड़ा सा कम होना चाहिए, ज्यादा छोटा तो नहीं हो सकता. So that's how you figure out कि कुछ ना कुछ mistake किया. So we go back and just correct that. Okay. So that's the value of t that we have. Okay. Pretty straightforward. Let's move on to the next part. Now it says find the total distance traveled by the car during the motion. Total distance. It's a velocity time graph. Velocity time graph के अंदर आपका जो area under the graph होता है, that represents displacement. यहाँ पे क्योंकि एक ही डायरेक्शन के अंदर मोशन के अंदर मूवमेंट हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस आपके दोनों इक्वली होंगे. आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे टोटल एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करना. ठीक है, नाउ देयर आर a number of portions that you can divide your area into. One idea could have been you can say you have this trapezium. Let me think about it. What could be the quickest way of doing this? Okay, so let's say, maybe not the quickest. Let's say you got this portion. ये आपके पास येलो पोर्शन है, इसका एरिया फाइंड करना है. ये तो रेक्टेंगल है और आपके पास एक ये रेक्टेंगल है. ये दो रेक्टेंगल्स हो गए. I want to shade this in a different color. So you got this rectangle. Then you have this triangle. Okay, and you have this triangle. And you have this figure here. So that's a lot of figures. And you also have I've run out of colors. So this is another triangle, let's say. ठीक है, so ये बहुत सारी different figures बन रही हैं. इन सब के areas calculate करने हैं, उनको add कर देना. Now the actual calculations are not very difficult, not very complicated, लेकिन बस बहुत ज़्यादा calculations हैं. तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं.
triangle के area, so I'm going from left to right. ठीक है, I'm going from left to right. In fact, इसको मैं थोड़ा सा figures को number of figures को कम कर सकता हूँ किसी तरह से. So I can call this trapezium instead, just to reduce the number of different figures that I have. I can say this is the trapezium, जिसको मैं पूरे को इकट्ठा ले लेता हूँ. So I've reduced one figure. Yeah, I can't really reduce it any further because इसको और reduce नहीं कर सकता. अच्छा, अब येलो वाले ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड कर लेते हैं. वो कैसे आएगा? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. पैरेलल साइड यहाँ पे क्या है? This is 25, opposite side is 20. ठीक है, 5 से लेकर 25 तक. ये आप यहाँ पे लगते हैं 25 plus 20 into the height. Height is 20 for the yellow trapezium. ये आपका येलो वाला पार्ट हो गया. ठीक है, ये उसका एरिया हो गया. Okay, let's do the next part. Next you have this triangle. ये वाली, इसका एरिया कैसे आएगा? You've got the base, that's 5. You've got the height of this triangle, that is 14. Half into base into height. Half into 5 into 14. So plus half into 5 into 14. That's the second thing. This is this triangle. Actually, ये second part हो गया. Then you have this green rectangle. Green rectangle के area कितना आएगा? आपको t की value पता है? That is 46.5. This is going to be 46.5 minus 25. That is 21.5. ये आपकी base होगी. Height कितनी है इस rectangle की? 6. So we have 21.5 into 6. Khizr, you could do that. You could do that. आप वो पूरा rectangle ले सकते हो. उसमें भी number of figures उतनी रहेंगे, right? So मसला वही है कि number of figures आपके पास इससे बेहतर नहीं आता. So it's the same thing. उससे बहुत ज़्यादा कोई फायदा नहीं होगा. ठीक है? But you could do that. That's also fine. इसको बहुत सारे different ways में break कर सकते हैं. Okay? अच्छा. Green part का कितना हो गया? 21.5 is the base. 6 is the height. We have 21.5 into 6. ये आपके पास green part का area आ गया. अच्छा, then we have this trapezium. T से लेकर, yes, that's a trapezium. Yes, Fazin, that's correct. The purple one is a trapezium. अब इसमें क्या है? इसमें हमारे पास sum of parallel sides. ये 6 है. This is 6. This is 6. और पूरी हाइट कितनी है? 20. तो sum of parallel sides कितनी होगी? 6 plus 20. That is 6 plus 20 into height. Height कितनी होगी? T से लेकर 50 तक. This is the height of this trapezium. What's that? 50 minus 46.5. That is 3.5. ठीक है? Okay. That's a lot of manual work for 2 marks. But what can we do? We have 10 here for this triangle now, and height, that is 20. The last blue triangle है, उसकी 10 base है, 20 height है. That's going to be half into 10 into 20. So we've got all of these different figures. इन सब के areas निकाल के इनको add कर देंगे. ठीक है? Now this will give you 1 mark. Just writing all of this, and then you'll have 1 mark for the answer. You पूरा calculate करके आप यहाँ पे answer लिख देंगे. So what do we get? Anybody who is done with this calculation? $776.5, 774.5, and we have a confirmation. Actually, just figured out there could be an easier way of doing this, and that is okay. Now, अब तुमने कर लिया, but आप ये कर सकते थे. ये पूरा एरिया फाइंड कर लेता, मतलब इस ट्रेपेजियम का ये पूरा ट्रेपेजियम फाइंड कर लेता. ठीक है, ये आ गया. उसके बाद आप उसमें से माइनस कर लेते हैं ये वाला ट्रेपेजियम, right? That would have been quicker, right? Yeah, so that would have saved some time for us. But what do we get from this? 759.5
So I have two different answers, 759.5 and 774.5. Which one is correct? Okay, so this should be 759.5. Okay, ठीक है. Okay, so we get 759.5. यहाँ पे कोई careless error हो सकता है. You can just verify that. ठीक है. But you get the idea. आप क्या करना है, सारी areas calculate करना है, तो add करना है. But there's a quicker way कि आप इस पूरे trapezium का find कर लेते हैं, which we only figured out when we were done with with all of that. पूरे trapezium का find करते, उसमें से ये वाला part minus कर देते. That would have been much quicker. But okay, ठीक है. अच्छा, let's move on. A van of mass 3,600 kilograms is towing a trailer of mass 1,200 kilograms along a straight horizontal road. Right, Hashim? Thank you. Yeah, so that should be 759.5. Okay, good. A van of mass 3,600 kilograms is towing a trailer of mass 1,200 kilograms along a straight horizontal road. अच्छा, mechanics में जब आपको figure नहीं दी हो, आपने जरूर स्केच कर लेनी है ताकि आपको समझ आ जाए कि वो सिनेरियो एग्जैक्टली किस तरह है. ठीक है. सो while you read this, you can just sketch a rough figure to understand the situation better. So there's a van of mass 3,600 kilograms and a trailer of mass 1,200 kilograms. So my drawing is not good, so I'm just going to represent everything with boxes, right? So that's, you've got one box, that's a van, and that is towing this trailer. So I'm calling this a van. Right side के ऊपर, and there's the trailer. Okay, we have their weights given, the masses given, उससे weight निकाल सकते हैं. अभी एक horizontal road के ऊपर आ रहे हैं. They're connected with a light horizontal rope. There are resistance forces of 700 Newton on the van. Okay, so van के ऊपर 700 Newton resistance लग रही है. So that's in this direction. That's 700 Newton. And 300 Newton on the trailer. So trailer के ऊपर you've got a resistance of 300 Newton, like this. So basically we are assuming कि right side का movement है, movement right side पे हो रही है, तो friction left, resistance जो है उसके opposite लग रही है. Okay, अच्छा. The driving force exerted by the van is 2,500 Newton. So ये जो van की driving force है, that is in this direction, right side के ऊपर. That is 2,500 Newton. Okay, so these are the forces that we are given. उसने क्या, find the tension in the rope. मुझसे भाई इसमें tension होगी, thrust नहीं होगी. Thrust आपके पास तब होती है जब आपके पास rod आ रहा होगा, right? This is a rope. It's a light horizontal rope. Rope में जिस चीज में slack हो सकता है ना, वो उसमें tension नहीं होती है सर. Rod अगर आपके पास हो, उसमें you can sometimes have thrust. उसमें possible होता है. अगर आपके पास कोई solid object हो, उस तरह का. Solid मतलब hard object हो, right? Hard object हो तब उसमें thrust हो सकती है. But this is not hard. This is a rope. Rope hard नहीं होती उस तरह से. Okay. अच्छा. So these are the forces that we have. अब देखते हैं इसके अलावा कौन सी forces act कर रही हैं. हमने ये तो represent कर लिया इसके ऊपर. अब इसके अलावा कौन कौन सी forces हैं? We have tension. ये rope है दरम्यान में, तो उसमें tension होगी. Now, if we talk about the van के perspective से tension किस side पे लग रही है? Van के ऊपर जो tension लग रही होगी वो left side पे लग रही होगी. Van के ऊपर tension left पे लग रही है. But if we consider from the perspective of the trailer के ऊपर tension किस side पे लगेगी? Trailer के ऊपर tension लगेगी right side के ऊपर. Okay? Trailer के ऊपर tension लगेगी right side के ऊपर, van के ऊपर tension लगेगी left side के ऊपर. Okay? अच्छा. What other forces do we have? हमने सारी forces represent कर ली. We have weight. Yes, weight होगा. Weight आपका van का कितना है? That is 36,000 Newton. और trailer का कितना है? That is 12. No, the other way around. Yeah, that's fine actually. 12,000 Newton. ये आपका trailer का weight है. ठीक है. अब उसका opposite reaction होएगा.
These are all the forces that we have. लेकिन हमें ये vertical forces चाहिए नहीं यहाँ पे, because vertical forces reaction आपको तब चाहिए होता अगर आपको friction calculate करनी होती. यहाँ पे friction तो आपने नहीं calculate करनी, उसने resistance आपको बताई हुई है automatic or already, so we don't really need those vertical forces. Although they are applying, लेकिन बस reaction आपके weight के equal हो जाएगा, हमें उसकी जरूरत नहीं है यहाँ. Okay. अच्छा. Now how do we find this tension? Now we have forces. Forces की वजह से आपके objects move कर रहे हैं. There are two objects that are connected. तो हम क्या करेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अलग अलग न्यूटन सेकंड लॉ जो आपका RF equals m है वो अप्लाई कर देते हैं. ठीक है. सो इफ वी कंसिडर द ट्रेलर, रिमेंबर आपकी मूवमेंट के साइड के ऊपर है, मूवमेंट आपकी राइट साइड के ऊपर, मोशन इज टुवर्ड्स द राइट साइड. नाउ लेट्स कंसिडर बोथ द ट्रेलर एंड द वैन वन बाय वन. ट्रेलर के ऊपर कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? हम दोनों के ऊपर क्या करेंगे, हम ये लगाएंगे RF equals m है, resultant force equals mass into acceleration. Now movement right side के ऊपर है, तो forward force आपकी कौन सी है ट्रेलर के ऊपर? That is tension. Tension is the forward force. What's the backward force? That's 300 जो आपकी resistance है, ये आपके ट्रेलर के ऊपर लेफ्ट साइड पे लग रही है. T minus 300 should equal mass of the trailer. ट्रेलर का mass कितना है? Mass that is 1200 into acceleration. That's your first equation. ठीक है. अच्छा. Now let's consider the van. What forces do we have acting on van? Van के ऊपर right side पे एक force लग रही है, that's the driving force. 2500 Newton वो forward force है. Backward forces कौन से लग रही हैं? You've got 700 Newton that's acting towards the left side. And you've got this tension, ये backwards लग रही है. All of this should equal mass of the van, which is 3600 into the acceleration. Acceleration दोनों की same होगी because they're connected by a rope. तो दोनों same acceleration पे move कर रहे होंगे. तो यहाँ भी हम A use करें, यहाँ भी A use करें. You've got two equations. You've got to find tension using these two equations. अच्छा, उसने acceleration तो यहाँ पे नहीं पूछा, और next part में भी apparently सब कुछ change हो रहा है, आपको नहीं चाहिए. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ हमें tension चाहिए. ठीक है. तो हम acceleration को eliminate कर लेते हैं. ठीक है. A को eliminate कर लेते हैं. Now, how can we do that? One way to do this could have been, ये 3600A है, this is 1200A. पहली वाली equation को मैं 3 से multiply कर दूँ अगर, थोड़ा आसान हो जाएगी, calculation जल्दी हो जाएगी. 3t minus 900, that equals 3600A. And the second equation is 25 minus 7, that is 1800 minus t equals 3600A. I got these two equations. I can do elimination. Fazan, what about 300? 300 तो हमने यहाँ पे कर लिया ना, ट्रेलर की फ्रिक्शन, ट्रेलर के ऊपर रेजिस्टेंस है 300, तो वो तो हमने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर लिया ऑलरेडी. वैन के ऊपर तो नहीं लग रही ना रेजिस्टेंस, वैन के ऊपर तो 700 न्यूटन एक्ट कर रहा है. तो हम इंडिविजुअली देखते हैं, हम वैन को अलग से देख रहे हैं, ट्रेलर को अलग से देख रहे हैं. वैन के ऊपर रेजिस्टेंस 700 न्यूटन एक्ट कर रही है, सो वी टेक 700 देयर. ओके. अच्छा, सो वी गॉट दीस टू इक्वेशंस, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है हमें. I'm going to do elimination here. Of course, you could do any other thing that you want here. हमें T चाहिए, तो मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे मैं A को eliminate कर दूंगा. ठीक है. A को कैसे eliminate करेंगे? I'm going to subtract the second equation from the first. I'm going to change the signs. Cancel हो गया. What am I left with? I'm left with 3T plus T, that is 4T, and minus 2700 equals 0, and that's going to give me a value for tension. 2700 over 4. What's that? 2700 over 4. Calculation से सारी check भी कर लें. 675. 675 Newton. That's the tension that we get. Okay. Yeah, मैं find करना था. Okay, this is one way to do it. Some people are more comfortable using resultant force equals MA on the whole system. वो भी आप कर सकते हैं, पूरे system को इकट्ठा करके. That's also fine. उसमें कोई मसला नहीं है. If you're more comfortable with that, that is also perfectly okay. Okay, so that was the first part here. All right. If you have any questions, make sure that you're posting them in
ऑन दिस अकाउंट, ये जो को होस्ट वाला अकाउंट है, आप वहां पे देखें, अदरवाइज आपकी चैट जो अभी आप मैसेज करेंगे वो हमारे से मैसेज हो सकता है, ठीक है। को होस्ट वाले अकाउंट पे करें या फिर पब्लिक मैसेज करें, सो दैट्स दे आर बोथ ओके। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन। Now, the driving force is removed in the second part, and the van driver applies a braking force which acts only on the van. Okay, now the situation has changed. कुछ forces आपकी पहले से different हो गए हैं. Now, we're going to draw that figure again because forces change हो गई हैं. The forces change होती हैं. We prefer drawing another figure. ताकि careless errors नहीं हो जाए. So we've got the two connected by a rope still. This is the trailer. This is the van. अब ड्राइविंग फोर्स नहीं है राइट साइड के ऊपर, but there's a braking force instead, which acts only on the van. Okay, which acts only on the van. So van के ऊपर ब्रेकिंग फोर्स क्या करेगी? मूवमेंट राइट साइड के ऊपर थी ना, राइट साइड पे मूव कर रहे थे ऑब्जेक्ट्स। जब ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वो किस साइड पे अप्लाई होगी? उसकी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? वो लेफ्ट होगी। ये आपकी ब्रेकिंग फोर्स है लेफ्ट साइड के ऊपर। लेट्स नेम दिस एनीथिंग। इसको बी कह लें, एफ कह लें, बी एफ कह लें, यू नो व्हाटएवर यू वांट। ये मैं इसको नाम दे दिया, लेट मी कॉल दिस बी। ये आपकी ब्रेकिंग फोर्स है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे एक्ट कर रही है। The resistance forces remain unchanged. So जो पहले resistances थी वो सेम रहेंगी। ट्रेलर पे 300 लेफ्ट साइड के ऊपर, this is 300 न्यूटन, और वैन के ऊपर it was 700. So we've got the same resistances as before. ये लेफ्ट पे ऐड कर रही हैं। What other forces do we have? We have got tension. Tension हमने यहाँ पे नहीं अभी रिप्रेजेंट की। ट्रेलर के ऊपर टेंशन किस साइड पे लगेगी? अवे फ्रॉम द ट्रेलर, दैट्स गोइंग टू बी टुवर्ड्स द राइट साइड। वैन के ऊपर किस साइड पे लगेगी? अवे फ्रॉम द वैन, दैट्स गोइंग टू बी टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ये आपके पास सारी फोर्सेस आ गई जो अलोंग द रोड लग रही हैं, ठीक है। वर्टिकल फोर्सेस हम नहीं देख रहे, हम अलोंग द रोड देख रहे हैं, ठीक है। Iman, that was just to solve the equations simultaneously. मैंने elimination method use किया वहां पे, तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसका फायदा ये हुआ, 3600A आ गया था, ये भी 3600A आ गया। So when I subtracted them, acceleration eliminate होगी, right? So I used elimination method of solving simultaneous equations. You could do substitution if you're not comfortable with this. रिजल्ट आपके पास सेम आएगा, राइट? आप ए को एलिमिनेट ए को सब्स्टिट्यूट कर दें तो उससे भी आपके पास सेम वैल्यू आ जाएगी। दैट्स जस्ट सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ओके। अच्छा, ऑलराइट, so we have to find the least possible value of the braking force which will cause the rope to become slack. Okay, अच्छा, now the objects are moving towards the right side. Both objects are moving towards the right side. Van भी right पे move कर रही है, ट्रेलर भी right पे move कर रहा है। और इस पॉइंट के ऊपर जो आपके पास ये रोप जिसने कनेक्ट किया हुआ है दोनों बॉडीज को, उस वो आपकी टॉर्ट है जब वो मूव कर रहा है। नाउ व्हेन यू अप्लाई अ ब्रेक ऑन द वैन, वैन स्लो होना शुरू कर देगी। ऑफ कोर्स जब वैन स्लो होना शुरू कर देगी, ट्रेलर तो उसके साथ कनेक्टेड था यूजिंग अ रोप, तो ट्रेलर के ऊपर तो कोई ब्रेक नहीं लग रही, राइट? तो ट्रेलर आगे मूव करता जाएगा, वैन थोड़ी स्लो होती जाएगी, तो आपकी जो स्ट्रिंग है वो स्लैक हो जाएगी, राइट? वो टॉट नहीं रहेगी, जो आपकी रोप है वो टॉट नहीं रहेगी। अब उस केस के अंदर आपने देखना है कि आपकी ब्रेकिंग फोर्स कितनी होगी तो आपकी स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी, ठीक है। ब्रेकिंग फोर्स कितनी होगी तो आपकी स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी ना। ऑफ कोर्स अब ज्यादा तो जितनी मर्जी अप्लाई करते जाओ ब्रेक, जब एक दफा स्लैक होगी तो फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से मेरे पास आता है 70 न्यूटन, अगर मैं ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई करता
तो उससे स्ट्रिंग स्लैक हो जाती है। अब 70 से ज्यादा जितनी भी होगी, अगर मैं 100 न्यूटन कर दूंगा तब तो स्लैक होना ही उसने इन एनी केस, क्योंकि ज्यादा जल्दी रुक जाएगी वैन और ट्रेलर जो है वो आपका आगे मूव करता जाएगा। तो एक आपका कट ऑफ पॉइंट होगा जिससे थोड़ी सी भी ज्यादा फोर्स होगी तो आपकी स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी, राइट। अब जब स्ट्रिंग स्लैक होती है तो क्या होता है, स्ट्रिंग स्लैक हो जाती है, स्ट्रिंग में स्लैक आ जाती है तो क्या हो जाता है, टेंशन खत्म हो जाती है, बिकॉज टेंशन इज ओनली देयर व्हेन द स्ट्रिंग इज टॉट। स्ट्रिंग सिर्फ तब टेंशन अप्लाई कर सकती है, सिर्फ तब पुल कर सकती है अपनी तरफ जब वो टॉट पोजीशन में होती है। जब स्लैक आ जाता है तो टेंशन क्या हो जाती है, टेंशन आपकी जीरो हो जाती है। सो दैट्स व्हाट वी डू हियर, वी से कि जब, क्योंकि आपकी स्ट्रिंग टॉट नहीं है, जब टॉट नहीं होगी आपकी टेंशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, राइट। सो एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम एज बिफोर, जो हमने पहले किया, राइट। एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम, ड्राइविंग फोर्स खत्म हो गई और टेंशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। स्लैक की वजह से your tension is going to become zero. Now, what happens when this is true? जब tension आपकी zero होती है क्या होता है, अब दोनों के, आप दोबारा से उसी तरह से ट्रेलर को देख लें और वैन को देख लें। ट्रेलर के ऊपर कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? You have tension acting forward, 300 acting backwards. Mass of the trailer is 1200 into acceleration. But then since we said tension आपकी जीरो होनी चाहिए, तो टेंशन की वैल्यू हम जीरो इनपुट कर देंगे यहाँ पे, and that gives us -300 equals 1200 times A. We do the same thing for on the van. Van के ऊपर कौन सी forces लग रही हैं? Is there any forward force? There's no forward force, so there's no driving force, तो उसको हम जीरो कह देते हैं। Backward forces कौन सी लग रही हैं? We've got the braking force. We are considering them negative. Why? Because movement right side के ऊपर है ना, तो आप कह सकते हैं कि जीरो फॉरवर्ड फोर्स है। बैकवर्ड फोर्सेस कौन सी है? बी लग रही है, टेंशन लग रही है और आपकी 700 लग रही है। What's the mass of the van? Van का mass कितना था? 3600. That times acceleration. Now again, टेंशन क्योंकि जीरो है, इस t की वैल्यू को हम क्या करेंगे? जीरो कर देंगे यहाँ पे भी। So we are left with -b minus 0 minus 700 equals 3600 times A. You can solve these equations to find the value of B. First equation से आपके पास acceleration आ जाती है, -300 over 1200. What do you get? -0.4 from that. -0.255 minus 0.25. याद है acceleration. You put that acceleration in the second equation, and that gives you -b minus 700 equals 3600 into -0.25. You solve this equation, find the value of b from that. Can somebody tell me what this value turns out to be? 3600 into 0.25, 900. 900 वहां पे जाएगा. This becomes 900 minus 700 equals b, and the braking force turns out to be equal to 200 Newton. ठीक है, that's the braking force that we have. Is that clear to everyone? Any problems? Any problems with this? Okay, good. Let's move on. So that was the second question. Do we have another part? No. Okay. Yes, Hazan. The second part was definitely a bit tricky, especially least possible उसने कहा है ना, तो उसका सोचना है कि अच्छा least possible basically हम सिर्फ वो कट ऑफ पॉइंट देखा है. We don't really have to worry about के उसके बाद क्या होगा, बस हमने टेंशन को जीरो कर देना. That's actually one reason why this paper has a pretty low threshold as well, क्योंकि इसके काफी questions के एक पार्ट में मसला है कुछ ना कुछ. Okay, let's look at this. Question number three. The diagram shows a semicircular track ABC of radius 1.8 meters.
which is fixed in a vertical plane. Okay. The points A and C are at the same horizontal level. You can see that in the figure. And the point B is at the bottom of the track. So आपको सब कुछ figure पे नजर आ रहा है. उसने कहा section AB is smooth, so this part is smooth. And the section BC is rough. This part is rough. A small block is released from rest at the point A. A से आपने ये block release किया है. Remember, A से B smooth है. We have to show that the speed of the block at B at this point is 6 meters per second. अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है, जब भी आपके पास इस तरह से कोई curved surface आए ना, do not use Newton's second law. वो आप नहीं यूज करें, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर्मूला भी आप नहीं यूज करें. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे चेंज हो रही होती है. इट्स नॉट कांस्टेंट, राइट? या तो आप उसको पहले उसके कंपोनेंट्स फाइंड करें. सम पीपल डू इट दैट वे, दैट वर्क्स समटाइम्स जब आपकी सरफेस स्मूथ हो. लेकिन इट्स बेस्ट टू अवॉइड दैट बिकॉज मोस्टली लोग इसमें मसला करते हैं. कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूला है या RF=ma आपने नहीं यूज करना जब भी आपके पास इस तरह का कोई कर्व सरफेस हो, क्योंकि कर्व सरफेस हर पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन चेंज होती है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होती उस वजह से, राइट? बिकॉज एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन में चेंज होती है, एक्सेलरेशन में चेंज हो रही है ऑफ कोर्स. तो आपने यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर्मूला नहीं यूज करने. इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आपने एनर्जी मेथड से करने हैं. दैट्स ऑलवेज गोइंग टू बी बेटर. ओके, अच्छा. अब A से B पे हम जा रहे हैं. A से B पे हम जा रहे हैं. इस पार्ट के अंदर द सरफेस इज स्मूथ. हमारे पास वो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है? वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स दैट इक्वल्स द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन against resistance. Right? This is an equation that we have that we can use in all sorts of situations. लेकिन आप यहाँ पे देखें, is there any driving force? There's no driving force. बस आपने बस उस बॉक्स को, उस ब्लॉक को रिलीज किया, वहां से कोई फोर्स उसको ड्राइव नहीं करी. This is zero. Is there any resistance? AB पार्ट के अंदर तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है because the surface is smooth. उसने यहाँ पे बताया, उसने कहा है कि AB पार्ट जो है वो स्मूथ है. So इसमें कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है. इसका मतलब है ये पार्ट भी जीरो है. So इस आपके पास क्या रहेगी? आप सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी रहेगी. So अगर आपके पास रेजिस्टेंस भी नहीं हो और आपके पास ड्राइविंग फोर्स भी नहीं हो, आप सिंपली क्या कर सकते हो? आप कह सकते हो कि एनर्जी, आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हो. जब आपके पास ड्राइविंग फोर्स भी नहीं है और रेजिस्टेंस भी नहीं है, उसमें आप सिंपली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हो. आपको पूरी इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है, बट इफ यू वांटेड आप कर सकते थे वो भी 0-0 करके. लेकिन इसमें आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर लो. क्या मतलब? टोटल एनर्जी एट द पॉइंट A दैट शुड इक्वल टोटल एनर्जी एट द पॉइंट B. दोनों पॉइंट्स पे सेम एनर्जी होनी चाहिए. The reason is there's no driving force and no resistance. जब दोनों चीजें नहीं होती तब हम कहते हैं कि एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है. अच्छा, ए के ऊपर क्या है? आप दो एनर्जी के में से दो टाइप्स की है, राइट? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. हम सब उनको कंसीडर करें. ए के ऊपर काइनेटिक एनर्जी कितनी है? उसने रेस्ट से रिलीज किया है. सो काइनेटिक एनर्जी तो ए के ऊपर 0 है. ओके, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई. व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी? You can take B as the reference point. आप इसको ग्राउंड ले लें, ग्राउंड लेवल. उससे हाइट कितनी है A की? It's 1.8. तो mass of the particle, mass of the block, are we given the mass? We are not given the mass. हम कह सकते हैं M is the mass into G, that's 10, into the height 1.8, that's potential energy. ठीक है? मैथ्स नहीं है उसका m की टर्म्स में कर लेना. दैट्स ओके, वो कैंसिल हो जाएगा. ओके, राइट साइड पे भी आपके पास m की टर्म्स में सब कुछ आ रहा होगा, राइट? वो कैंसिल हो जाएगा इन एनी केस. टोटल एनर्जी एट B के ऊपर, क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पे आ गए हो, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी.
राइट, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी आपको नहीं पता, आपको वही तो स्पीड ही तो फाइंड करनी है। काइनेटिक एनर्जी आप कह सकते हो हाफ इंटू एम इंटू स्पीड एट द पॉइंट बी। बी के ऊपर स्पीड को हम कह रहे हैं वी, बी इसमें बी के लिख देता हूँ यहाँ पे। ए के ऊपर आपकी स्पीड वैसे जीरो थी, तो काइनेटिक एनर्जी उस वजह से जीरो होगी। सो व्हाट आई हैव डन इज काइनेटिक एनर्जी plus potential energy at A, kinetic energy plus potential energy at B. You just solve this equation, you'll find the value of VB from that. M or M cancel, okay? What I will left with 18 into 2, that equals VB square, and VB turns out to be 6 meters per second from that. ठीक है? तो जब भी आपके पास ड्राइविंग फोर्स और रेजिस्टेंस दोनों ही नहीं है, आप ये एनर्जी कंजर्वेशन वाला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ओके गुड, लेट्स मूव ऑन। The block comes to instantaneous rest for the first time at a height of 1.2 meters above the level of B. अच्छा देखें, उसने A से स्टार्ट किया था and then it kept going on here, B पे पहुंच गया और फिर यहाँ पे आगे मूव करता जाएगा और वो कह रहा है किसी पॉइंट पे जाके it comes at rest, and that point when it comes to rest is 1.2 meters above the level of B. Okay, so B के लेवल से it's 1.2 meters above. So this height is 1.2 meters. Okay. The work done against resistance force, अब यहाँ पे resistance है, उसमें आपको बताया हुआ था कि BC रफ है, जब रफ पार्ट होगा तो of course there is going to be resistance there. Okay, so resistance उसने आपको बता दिया, work done against resistance from B to this point is 4.5 joules. ये आपके पास आ गया. You have to find the mass of the block using this information. Again, we don't have any driving force here, but we do have resistance. हम क्या करते हैं? Work energy principle use कर लेते हैं. Work done by the driving force, that equals change in kinetic energy plus the change in potential energy plus the work done against resistance. आपने सिर्फ इसमें वैल्यूज इनपुट करनी है. What about work done by driving force? वो जीरो है, ड्राइविंग फोर्स तो कोई है ही नहीं. What about change in kinetic energy? Change in kinetic energy. अच्छा, हम किस पॉइंट से देखें? हम पॉइंट बी से देख रहे हैं, राइट? बिकॉज बी से आपको उस पॉइंट तक रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई ना 4.5. बी इज द स्टार्टिंग पॉइंट. उससे कहाँ पे जा रहे हैं? उससे हम जा रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर. Let's call this point something. Let's call this point X. B से X वाली जर्नी देख रहे हैं. Now, what about the change in kinetic energy? X पे जाके it comes to instantaneous rest. तो X के ऊपर kinetic energy कितनी होगी? जीरो होगी. स्पीड जीरो है, right? Yes, that's correct. B के ऊपर कितनी है? हमने स्पीड फाइंड किया फर्स्ट पार्ट में 6. उसने आपको शो करने के लिए कहा था. This was 6 meters per second. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ इनटू मास 0 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर. ठीक है, इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो. चेंज को आप डायरेक्टली इस तरह में कैलकुलेट कर सकते हो. यू कुड हैव रिटन लाइक दिस एज वेल, m into 0 का स्क्वायर माइनस m into 6 का स्क्वायर. यू कुड हैव डन दिस एज वेल, but you could do that, write it directly like this as well. ठीक है, ये आपकी चेंज आ गई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ओके, अब देखिए नेगेटिव आ रही है और नेगेटिव ही आनी चाहिए क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपकी रिड्यूस हो रही है ना. पहले 6 मीटर्स पर सेकेंड थी, बाद में 0 हो गई. तो जब डिक्रीज है तो चेंज आपका नेगेटिव आएगा वहां पर. व्हाट अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली 0 थी. व्हाट अबाउट द फाइनल? 1.2 आपकी हाइट है, 1.2 हाइट है. मास कितना है? मास इज m into 10 into 1.2. ये आपकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है. पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी इंक्रीज हुई है? मास into
10, that's the gravity, mg into height. Height आपकी कितनी increase है? 1.2 meters, 1.2 से multiply कर दो. That's your potential energy. Work done against resistance, उसने बताया आपको, that is 4.5. Okay. And now you can just evaluate it and see what you get. ठीक है? Yeah, देख लें क्या आता है. Minus 36 over 2, that is minus 18m, and we have plus 12m plus 4.5. What does that give us? 6m equals 4.5, and then m turns out to be 0.75. 0.75 kilograms, that's the mass that we have here. Okay. Yes, Fazan, you could do it. You could use the what you got in the first part. आप कर सकते थे, but यहाँ पे लिख देना is going to save you from confusion. It's not going to take a lot of time. 5 सेकंड लगेंगे इसको दोबारा से लिखने में. It's okay. ठीक है. So हमने सिर्फ work energy equation use की and we found the mass from that. All right, let's move on. Unless there are any questions on this, I think there are none. So we can move on to the next part. Okay, question number 4. Good. A cyclist starts from rest at a point A and travels along a straight horizontal road AB coming to rest at B. The displacement of the cyclist from A at time t seconds after the start is s meters, where s equals this, so that distance AB is 250 meters. Okay. So displacement है हमारे पास. It's starting from A, so एक point A से उसने start किया है, travels along a straight road AB. Let's say this point is B. A से B की तरफ जा रहे हैं और B पे जाके it comes to rest. अच्छा. The displacement is given by this formula. S equals 0.004 into 75 t square minus t cube. Show that the distance AB is 250 meters. That's what we need to show. Now, how do we do this? Displacement, distance AB आपने show करना है कि वो कितना है? That is 250 meters. Now, what information do we have in this? उसने displacement का formula दिया हुआ है और उसने velocities का आपको बता दिया. क्या बता दिया? It starts from rest and then it comes to rest again at the point B. ठीक है? Now, what we can do is we can find velocity 0 किधर होगी? ये हमें figure out करना पड़ेगा ना? ये हमें figure out करना पड़ेगा. एक तो डिस्प्लेसमेंट से आप वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे? डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं? यस, फाजन, एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट वी हैव टू डू. वेलोसिटी को 0 से इक्वेट करना है, राइट? क्योंकि उसने कहा है कि बी पे जाके दोबारा वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो ए पे भी वेलोसिटी 0 थी और बी पे भी 0 है. So that's what we know about the point B के B पे जाके velocity 0 हो जाती है. Now, how do you go from displacement to velocity? Displacement से velocity पे जाने के लिए we differentiate, right? Yes, that's correct, Iman. So we differentiate it first. जो constant बाहर है वो तो वैसे रहेगा, उसको नहीं छेड़ता. 75 t square का derivative, that's going to be 150 t. T cube का derivative, that is 3t square. So that's the equation that you got for velocity. अब हम क्या करेंगे? Velocity को 0 से equate कर देंगे. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि B पे जाके velocity 0 हो जाती है. हम B point पे देखना चाह रहे हैं कितना टाइम लगता है वहां पे पहुंचने में. We get 0 equals 0.004 into 150t minus 3t square. And now we just solve this equation. 0.004 जाके divide हो जाएगा. And we have 3t square equals 150t. Remember, t को cancel नहीं करते यहाँ पे. उसको इस तरह से कर लेते हैं. Let me just write it like this. 150t minus 3t square equals 0. Now you can take 3t common.
and you're going to be left with 50t minus t, no, 50 minus t square, t minus t, and either 3t equals 0 or 50 minus t equals 0. So you get t equals 0 or t equals 50. ये आपके पास दो वैल्यूज आ गई, either t equals 0 और t equals 50. ये दो पॉइंट्स है जहां पे वेलोसिटी आपकी 0 होती है. अब वेलोसिटी 0 कब होती है? वेलोसिटी आपकी 0, सॉरी टाइम 0 पे आपके पास क्या है? टाइम 0 आपका वो वाला पॉइंट है जो पॉइंट ए था. उसने स्टार्ट भी तो रेस्ट से किया था ना, स्टार्ट भी उसने रेस्ट से किया था, तो ये आपका पॉइंट ए आ गया, उसने रेस्ट से स्टार्ट किया. t equals 50 is the other time instant जहां पे आपके पास वेलोसिटी 0 होती है. सो दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी बी. ये आपको पॉइंट बी आ गया. अब पॉइंट बी के ऊपर जाके आपके पॉइंट बी तक पहुंचने तक आपको कितना टाइम लगता है? 50 सेकेंड्स लगते हैं. अब हम क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट वाला जो फॉर्मूला है उसके अंदर हम 50 इनपुट कर देंगे, एंड दैट्स गोइंग टू गिव यू द डिस्प्लेसमेंट एट द पॉइंट बी. ठीक है, उसमें इनपुट कर दें. S equals 0.004 into 75 into 50 का स्क्वायर minus 50 cube. Just evaluate this on your calculator. ठीक है, कैलकुलेटर पे evaluate कर लें, देखें क्या आता है. It should turn out to be 250 meters. यानी कि जब टाइम 50 है तो टाइम 50 के ऊपर क्योंकि आप बी पे पहुंच गए, उस बी पे आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड की, दैट टर्न आउट टू 50 250. तो आपको आपने प्रूव कर दिया कि ए से बी जो डिस्टेंस है दैट शुड बी 250 meters. Yes, Mustafa, that's correct. In this case, you could cancel this t out. अब यहाँ पे इस t को कैंसिल कर सकते थे. Why? Because आपको पता है t की वैल्यू 0 तो नहीं है b के ऊपर, राइट? आपको b के ऊपर टाइम चाहिए ना, तो वहां पे आपको पता है कि t 0 नहीं हो सकता, तो आप इसको कैंसिल इस केस के अंदर कर सकते हो. But just don't want you to develop this habit of cancelling out variables. Variables को इस तरह से कैंसिल हम नहीं करते होते, कॉमन लेते होते हैं. That's the better way of doing this. Okay? So मसला ये होता है अगर आप यहाँ पे आप ये कर दोगे तो कभी कभी आप गलत जगह पे वो कैंसिलेशन कर देते हो जहाँ पे नहीं अलाउड होता. यहाँ पे यू कुड एक्चुअली कैंसिल. Why? Because t 0 हो नहीं सकता था b के ऊपर, इसलिए कैंसिलेशन कर सकते थे. But in general, we prefer taking this thing common like this. Okay, this is a better way of solving equations like this. Okay, so that's 250 meters. यहाँ पे ये show करना था. Let's do the second part. Find the maximum velocity of the cyclist. Yes, Mustafa, that's correct. You can only cancel that out when you are sure कि जो आप cancel कर रहे हो variable वो 0 नहीं हो सकता. Otherwise वो division by 0 वाला error आ जाता है जो हम नहीं कर सकते. Okay. अच्छा, find the maximum velocity of the cyclist. Do we have the velocity function of the cyclist already? We do. Velocity function हमारे पास क्या है? Velocity function is 0.004 into 150 minus 3t square. This is the velocity of the cyclist. Yes, Fazan, that's correct. Velocity का function ये आ गया आपके पास. अब किसी भी function का आप maximum point कैसे find करते हो? This is a quadratic function. Quadratic function का maximum point कैसे find करते हैं? One straightforward way of doing that is you differentiate it, put that equal to 0. Right? Turning point है ना, turning point के ऊपर डेरिवेटिव 0 होता है, तो आप क्या करोगे? इसका डिफरेंशिएट करोगे. वेलोसिटी का मैक्सिमम पॉइंट चाहिए ना आपको, तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव फाइंड करोगे. What will that turn out to be? 0.004 outside as it is into 150. 150t का डेरिवेटिव 150 हो जाएगा. 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव 6t. अब क्या करोगे? आप इस डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट कर दोगे, राइट? जो हम P1 डिफरेंशिएशन में करते हैं, किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं? वी फाइंड द डेरिवेटिव एंड पुट दैट इक्वल टू 0. टर्निंग पॉइंट चाहिए होता है, वही हम कर रहे हैं यहाँ पे. डेरिवेटिव फाइंड किया, 0 से इक्वेट कर दिया, एंड what does that give you? That gives you 0 equals 0.004 into 150 minus 60
150 equals 60 and t equals 25. This is the time when velocity is maximum. ये आपने वो time instant find कर लिया. अब क्या करें, इसको वापस input कर दें velocity के equation के अंदर. You get the maximum velocity. Velocity क्या आ जाएगी? 0.004 into 150 into 25 minus 3 into 25 का square. And you just evaluate that thing, you'll get a result. Iman, that's correct. That's correct. You could multiply this constant inside the bracket and then differentiate every term individually. That is also fine. उसका कोई मसला नहीं है. You could do that. ठीक है, वो भी सही है. Okay, so what do we get? Velocity आपके पास कितनी आ गई? 7.5 meters per second. So this is your maximum velocity. Okay, so that was question number 4. Okay. कितने parts हैं इसके? 2 parts. So 6, 7. Okay. इसमें कोई मसला है किसी को? I'll have to stop at this point. As communicated earlier, we'll complete this paper tomorrow. कल के बाद से इंशाल्लाह हमारे regular sessions पूरे paper के हुआ करेंगे. I just need to submit some checked papers. All of you know who have been my regular students. मेरे paper checking जो है वो बहुत slow होती है. So again, I have some deadlines coming. और वो मैंने अभी तक submit नहीं किया. So I need to submit them. So let's stop it at this point. कल हम इसको complete करेंगे इंशाल्लाह. ठीक है? Yes, Fazan. I think I have checked your M1 paper already. I haven't checked the total yet. मैंने total नहीं किया वैसे अभी. Did you even give M1? मुझे याद नहीं आ रहा वैसे. मुझे देखना पड़ेगा. M1 दिया था ना आपने? Okay. अच्छा आपने S1 में दिया. Okay. Yeah, so the other school students would be shocked right now. You have a choice of not giving exams. How is that possible? जेटी वाले तो परेशानी हो गए. ये क्या हो रहा है यहाँ पे? मर्जी होती है तो पेपर देते हैं, मर्जी होती नहीं पेपर देते. राइट फाज़ान? ओके. अच्छा चलिए, we will stop it here for today. 3 questions रहते हैं इसके. Question number 5 I think is not very difficult. 6 the second part थोड़ा सा tricky है. 7th is quite tricky. ये हम इंशाल्लाह कल करेंगे. We'll complete this paper tomorrow इंशाल्लाह. ठीक है. That's it for today. We'll continue tomorrow inshallah. Allah Hafiz everyone.